IIT Jodhpur is not just an academic institution, it is a social system. Every day, hundreds of people occupy the space, students learning, professors teaching, and staff maintaining the campus. Each group has a role, but not all roles carry the same level of visibility, comfort, or respect. In this documentary, we study social stratification at IIT Jodhpur through the functional perspective of sociology. We ask, how does this hierarchy function? Why does it exist? And what does it mean for those who live and work within it? The functional perspective, developed by sociologists like Emile Durkheim, Talcott Parsons, and Davis and more, viewed society as a system, much like a living organism, where every part of that organism has a function. According to this view, social stratification, the ranking of people and roles is not random. It exists to ensure that essential tasks are performed efficiently. In an institution like IIT Jodhpur, students learn and innovate. They are the future workforce. Faculty teach and generate knowledge. They are the intellectual backbone. Non academic staff, guards, cleaner, and mess workers provide the services that allows the entire system to function smoothly. From this perspective, the stratification is functional. It maintains the order and stability. But does it also maintain equality and respect? That's what we set out to explore. Now, we take the interview of a B.Tech student. My interactions, personal interactions with the staff or the guards is not exactly a lot as compared to those that I have with my fellow students. It is mostly very cursory, by way of greetings whenever I leave or enter the hostel at different times of the day. Sometimes a little bit more when we are supposed to interact together or work together during some sort of emergency or something. But apart from that, nothing much. Week is quite hectic considering I'm in the third year of my electrical engineering branch. It looks something like this. Begins with classes, lectures till evening, the afternoon or evening. So that's 5 to 7 hours of classes per day. Then barely some time for lunch. And since I'm the vice president of a board of co-curricular affairs, I have an extra workload of proposals and getting documents signed and approved. So back and forth, multiple doing back and forth rounds of multiple offices between multiple faculty members and office officials. That takes away a couple of hours per day of my time. And after that comes the rest of the day, where I spend either time self-studying for quizzes or minors or major examinations, and other competitions for my co-curricular activities, and finally a couple of hours at max per day for my own leisure and hobbies like playing video games and all. So, if you talk about my personal free time, most of it is spent in the Tinkerers Lab, where I spend time, studying, making cool stuff, or just having fun with my friends, or in my own room. So these are the two places where I feel most comfortable moving in and out, and these are the places also that I feel a shared stake of ownership, and these are the two places where I spend the most amount of my time. Personally, what I feel is that the student body particularly has a certain set of certain limits of powers, which can both be said to be enough, adequate, and inadequate. What we have till now is definitely made almost full use of in certain aspects, especially talking about tech and acads and co-curricular activities, where the student representatives, various student representatives of the student councils, they do represent the asks, the demands of students, and they do get it done, and they do act as a proper bridge between the administration and the student body. Some other areas might feel a little less inadequate at times, that more power, disproportionate power is rested with the admin and not with the students, especially when compared to other IITs. But all in all, I feel like a certain equilibrium is balanced here, is maintained here, and it somewhat works well for us in most aspects of student life. Now, we take the interview of an M.Sc student. तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि आईआईटी जोधपुर में जो भी गार्ड सर हैं और जो प्रोफेसर सर हैं, वो कैसे कैसे इन दोनों में अंतर है।
और कैसे दोनों का बिहेवियर स्टूडेंट के मतलब स्टूडेंट होने के नाते चेंज होता रहता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर किसी ऑफिस में, हर किसी हॉस्टल में, या हम जहाँ कहीं भी जाते हैं हम गार्ड सर को देख सकते हैं। तो गार्ड सर से जो कि आसपास के रहने वाले सभी लोग हैं, अपने वातावरण के, अपने इन्वायरमेंट के बारे में वो अपनी बातें शेयर करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कल्चर होता है, ऐसा कल्चर नहीं होता है। वहीं पर जब हम प्रोफेसर से बात करते हैं तो हमारी प्रोफेसर से बात केवल एकेडमिक होती है। एकेडमिक जो भी हमारा जीमेल पे अगर हमसे उनको मिलना है तो पहले जीमेल करना होता है। लेकिन वही गार्ड सर से क्या है कि नॉर्मली हम जैसे अपने घर पे और लोगों से बिहेव करते हैं, उस तौर तरीके से हम बिहेव करते हैं। लेकिन वही एकेडमिक्स के तौर पर हमको केवल प्रोफेसर सर से बातचीत करना होता है। उतना रिलेशन उनसे वो नहीं बन पाता है और बीच में एक गैप जनरेट हो जाता है स्टूडेंट। तो एज IIT जोधपुर या और भी IIT देख सकते हैं हम, तो यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट का जो स्टूडेंट को जो भी पावर दी गई है वो केवल यही पावर है कि वो अपने एकेडमिक्स में अच्छा करें और जो भी उनका प्लेसमेंट वगैरह हो रहा है उसकी तरफ जाएं। लेकिन एज ए रिसर्च या हायर एजुकेशन में इसमें MSc का कोर्स है, PhD का कोर्स है, तो यहाँ पे एज ए JNU, DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU या और भी जो भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जितना पावर होता है स्टूडेंट के हाथ में, उतना पावर यहाँ पे नहीं होता है। और स्टूडेंट को केवल या अपने गेम वगैरह ऑर्गेनाइज करानी है, कोई प्रोग्राम कराना है, तो केवल उसी में ही उसको पूरा छूट दी हुई है। लेकिन और जैसी चीज़ें हैं कि अटेंडेंस का क्राइटेरिया है या हड़ताल करना है, प्रोटेस्ट करना है, तो ऐसा यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है। उसमें पूरा ही निल है। जो भी है सब एकेडमिक्स एडमिन या डायरेक्टर सर हैं उन पे ही डिपेंड करता है। स्टूडेंट के हाथ में यहाँ पे कोई कुछ भी ऐसा पावर नहीं है। आपने JNU DU की बात करी, वहाँ पे कुछ ऐसे पावर आप बता थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हो? मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज से पास आउट हूँ, जहाँ से मैंने बैचलर्स किया है। वहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट, अगर कोई प्रिंसिपल 75% का एक क्राइटेरिया बना रहा है अटेंडेंस का, तो हम उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं। और हम मतलब गेट के बाहर जाके, अपना हाई कोर्ट जाके, वहाँ पर पूरा भी जो भी वहाँ पर स्टूडेंट यूनियन है, वो स्टूडेंट यूनियन अपना पूरा वो चलाते हैं और वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। और मतलब कि ऐसे प्रिंसिपल पे एज ए वाइस चांसलर दबाव बनाते हैं कि ये भी जो आपने नोटिफिकेशन जारी किया है इसको वापस लीजिए, या जो भी कमियां हैं, चाहे हमको बाथरूम सही नहीं है तो हमको क्या होता है कि प्रोटेस्ट का रूप ले लेते हैं। कोई भी समस्या है वो पूरा स्टूडेंट यूनियन के द्वारा प्रोटेस्ट का रूप ले लिया जाता है, और जो कि उसका संभावना होता है कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं कि बाहरी लोगों को ये लगता है कि अगर राजस्थान में IIT जोधपुर है तो वहाँ पर पानी की कमी होगी या रेत होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जैसा हिमालय में जैसा हवा मिलती है वैसे यहाँ पे हवा मिलती है। और हम जब भी अपने फ्री टाइम में होते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी नर्सरी वगैरह हैं, हिरन वगैरह देख सकते हैं हम, और बहुत सारे भी जानवर वगैरह, छोटे छोटे जानवर हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब भी स्टूडेंट अपने फ्री समय में होते हैं वो या तो सामने चले जाते हैं, जिस भी कंफर्टेबल जोन में वो रहना चाहते हैं उधर चले जाते हैं, चाहे वो लोग कैंटीन चले जाते हैं या अपनी लाइब्रेरी किताब पढ़ने के लिए चले जाते हैं। एज ए MSc स्टूडेंट मैं अपने लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी खूबसूरत नर्सरी है उधर जाता हूँ, और उसी के बराबर तालाब है, उस तालाब पे बैठ कर अच्छा लगता है। और आप जैसे कि आपको कुछ प्रिपरेशन करनी है पेपर या ऐसे है, तो उसके लिए आप कैसे, कहाँ जाते हैं? या तो एज ए MSc स्टूडेंट मेरा IDRP डिजिटल ह्यूमैनिटीज है। चूँकि मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की उनके अंडर मैं अपना प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे एक लैब मैम ने असाइन कर दी है। तो मैं उस लैब में जाके CET PhD की लैब में जाके मैं अपना कार्य करता हूँ। और चूँकि ये मतलब B.Tech वाले स्टूडेंट के लिए असाइन नहीं होती है, तो वो ज़्यादातर अपने लाइब्रेरी में बैठ कर करते हैं। Faculty and research scholars often acknowledge this interdependence. They see themselves as guides and facilitators, maintaining academic order and mentoring the next generation. They too operate within hierarchies: senior versus junior faculty, academic departments, research groups. The functional approach explains the structures necessary for coordination and specialization, yet also reveals how easily function turns into formality, where connection gives way to separation. Now, we take the interview of a guard. वैसे हमारे पास पावर तो है, जैसे कोई अनलीगल काम होता है तो लीगल हो जाता है। जैसे कोई बच्चे गलत काम कर रहे हैं और उनको टोकते ही रुक जाता है, नहीं रुकता है तो हम ऑफिस में लीगली रिपोर्ट करते हैं।
कैंपस में रहते हैं हाँ, और प्लस यहाँ लैब के अंदर रहते हैं। लैब के अंदर। और कहाँ पर आपका काम कम होता है, जाते नहीं आप ज़्यादा वहाँ? हम हेड ऑफिस है, जैसे लैब के अंदर ऑफिस है, क्लास है, हम्म। यहाँ बहुत कम लगता है। प्रोफेसर है, स्टूडेंट है, वो सब रिस्पेक्ट देते हैं, भैया जी बोलते हैं, मतलब ऐसे मतलब भैया जी बोलते हैं। For the non academic staff, the institute is a workspace, not a classroom. They keep the system running, opening gates, cleaning spaces, serving meals. Their schedules are longer, their presence constant, yet their social visibility limited. From a functional perspective, they perform essential maintenance roles that ensures continuity. But sociology also invites us to notice how functional necessity doesn't always translate into social recognition. The staff makes the system work, but do they fully belong to the system they sustain? Through the functional lens, IT Jodhpur appears as an interconnected, organized system. Each group's role contributes to stability and progress. Students learn, faculty teach, and staff sustain. Together, they form a balanced structure where every layer supports the other. Functionalism, therefore, helps us understand why hierarchy exists and how it keeps the institution running smoothly. But smooth functioning alone does not mean equal experience. Functionalism explains the purpose of hierarchy, but not its emotional or moral cost. It tells us how the system works, but not how it feels to those inside it. Sociologist Pierre Bourdieu argued that institutions also reproduce symbolic hierarchies, forms of inequality that feel natural because they're built into everyday life. On our campus, these hierarchies appear in small, silent ways, in who has access to air conditioned rooms versus outdoor posts, in whose names appear on boards and papers, in whose voices are heard in meetings and whose are not. Functionalism values order, but can overlook dignity. The system functions, yes, but for whom does it function best? The functional perspective helps us see IIT Jodhpur as a working organism where every group performs vital tasks. Yet sociology reminds us that a truly functional system is one where every member also receives respect and recognition. Social stratification may be necessary for organization, but it should never justify invisibility. The challenge is to balance, to combine function with fairness, hierarchy with humanity. Every person here, student, faculty, and staff, is a thread in the same fabric. When we recognize that interdependence, the campus becomes not just functional but truly social.